A very good evening and welcome to the news at 6, where we get you the day's top developing stories. Let's start with the headlines. Prime Minister Narendra Modi delivers a plenary address at the World Economic Forum in Davos, asks global community to become a part of the new India story, recalls Mahatma Gandhi to say India welcomes positive aspects of all cultures. From technology to climate change, GDP growth to terrorism, Prime Minister Modi speaks on a range of issues in his characteristic style, outlines India's growth from being a $400 billion economy in 1997 to its hopes of being a $5 trillion economy by 2025. Riding on a bull run for the fifth day, Sensex and Nifty scale fresh all-time highs. Record rise in indices comes a day after IMF says India is projected to grow at 7.4% in 2018 and become the world's fastest growing economy. Supreme Court dismisses petitions of Rajasthan and Madhya Pradesh governments on the film Padmavat, refuses to reconsider lifting the ban on law and order concerns. And a three-day shutdown ends in the U.S. President Donald Trump signs short-term bill that will keep American administration funded till the 8th of February. Our top story comes from Davos, where Prime Minister Narendra Modi, as the keynote speaker, addressed the plenary session of the World Economic Forum. The much-awaited speech focused on the new India and its willingness to transform and perform, and also the challenges ahead for the global community. दावोस में आखिरी बार भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा सन 1997 में हुई थी, जब श्री देवेगौड़ा जी यहाँ आए थे। 1997 में भारत का जीडीपी सिर्फ $400 बिलियन से कुछ अधिक था। अब 2 दशकों के बाद यह लगभग 6 गुना हो चुका है। अपनी आर्थिक और सामाजिक नीतियों में केवल छोटे-मोटे सुधार ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि आमूल-चूल रूपांतरण कर रहे हैं। हमने जो रास्ता चुना है, वो रास्ता है रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। आज हम भारत की अर्थव्यवस्था को जिस प्रकार से निवेश के लिए सुगम बना रहे हैं, उसका कोई सानी नहीं है। इसी का नतीजा है कि आज भारत में निवेश करना, भारत की यात्रा करना, भारत में काम करना, भारत में मैन्युफैक्चरिंग करना और भारत से अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को दुनिया भर को एक्सपोर्ट करना, सभी कुछ पहले की तुलना में बहुत आसान हो गया है। रेड टेप हटाकर हम रेड कारपेट बिछा रहे हैं। अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्र फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए खुल गए हैं। मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि अगर आप वेल्थ के साथ वेलनेस चाहते हैं तो भारत में आइए। अगर आप हेल्थ के साथ जीवन की होलनेस यानी समग्रता चाहते हैं तो भारत में आए। अगर आप प्रॉस्पेरिटी के साथ पीस चाहते हैं तो भारत में आए। आप भारत आए, भारत में हमेशा आपका स्वागत होगा। लेकिन मैं यहां समय की सीमा को देखते हुए
सिर्फ 3 प्रमुख चुनौतियों का जिक्र करना चाहता हूं जो मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़े खतरे पैदा कर रही है। पहला खतरा है क्लाइमेट चेंज का। ग्लेशियर्स पीछे हटते जा रहे हैं, आर्कटिक की बर्फ पिघलती जा रही है, बहुत से द्वीप डूब रहे हैं या डूबने के कगार पर है। बहुत गर्मी और बहुत ठंड, बेहद बारिश और बाढ़ या बहुत सूखा, एक्सट्रीम वेदर का प्रभाव दिन ब दिन बढ़ रहा है। हर कोई कहता है कि कार्बन एमिशन को कम करना चाहिए, लेकिन ऐसे कितने देश या लोग हैं जो विकासशील देशों और समाजों को उपयुक्त टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक संसाधन मुहैया कराने में मदद करने के लिए आगे आते हैं। आपने अनेक बार सुना होगा, भारतीय परंपरा में प्रकृति के साथ गहरे तालमेल के बारे में अगर हम सोचें तो पाएंगे कि आज पर्यावरण में व्याप्त भयंकर कुपरिणामों के इलाज का एक नुस्खा है प्राचीन भारतीय दर्शन का मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य। दूसरी बड़ी चुनौती है आतंकवाद। इस संबंध में भारत की चिंताओं और विश्व भर में पूरी मानवता के लिए इस गंभीर खतरे के बढ़ते और बदलते हुए स्वरूप से आप सब भली भांति परिचित हैं। आतंकवाद जितना खतरनाक है, उससे भी खतरनाक है गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट के बीच बनाया गया आर्टिफिशियल भेद। दूसरा समकालीन गंभीर पहलू जिस पर मैं आपका ध्यान चाहता हूं, वह है पढ़े लिखे संपन्न युवाओं का रेडिकलाइज होकर आतंकवाद में लिप्त होना। तीसरी चुनौती है, और मैं ये तीसरी चुनौती देखता हूं कि बहुत से समाज और देश ज्यादा से ज्यादा आत्म केंद्रित होते जा रहे हैं। ऐसा है कि ग्लोबलाइजेशन अपने नाम के विपरीत सिकुड़ता चला जा रहा है। इस प्रकार की मनोवृत्तियां और गलत प्राथमिकताओं के दुष्परिणाम को क्लाइमेट चेंज या आतंकवाद के खतरे से हम कम नहीं आंक सकते। हालांकि हर कोई इंटरकनेक्टेड विश्व की बात करता है, लेकिन हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि ग्लोबलाइजेशन की चमक धीरे धीरे कम होती जा रही है। टेक्नोलॉजी के जोड़ने, मोड़ने, तोड़ने, और मैं जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, जोड़ने, मोड़ने और तोड़ने, तीनों आयामों का एक बड़ा उदाहरण सोशल मीडिया के प्रयोग में देखने को मिलता है। आज डेटा ये बहुत बड़ी संपदा है। डेटा के ग्लोबल फ्लो से सबसे बड़े अवसर बन रहे हैं और सबसे बड़ी चुनौतियां भी। डेटा के पहाड़ बनते जा रहे हैं, उन पर नियंत्रण की दौड़ लगी है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है
कि जो डेटा को काबू में रखेगा वही भविष्य पर अपना वर्चस्व बनाएगा। इसी तरह साइबर सिक्योरिटी और न्यूक्लियर सेफ्टी के क्षेत्रों में भी तेजी से बदलती हुई टेक्नोलॉजी और विनाशकारी शक्तियों के विस्तार से पहले से चली आ रही चुनौतियां और भी गंभीर होती जा रही है। विज्ञान, तकनीक और आर्थिक प्रगति के नए आयामों में एक और तो मानव के समृद्धि के नए रास्ते दिखाने की क्षमता, वहीं दूसरी ओर इन परिवर्तनों से ऐसी दरारें भी पैदा हुई हैं जो दर्द भरी चोटें पहुंचा सकती है। दरारों और दूरियों को मिटाकर एक सुहाने और साझा भविष्य के सपने को साकार कर सकते हैं। Well, our Foreign Affairs editor Akhilesh Suman is joining us now from the newsroom for more on this speech, the highlights, what are the key points we're looking at, and also how the international world is, of course, how the international media and global leaders are looking at this speech. Akhilesh, thanks so much for joining us here. Firstly, of course, that very crucial statement that came out from that speech was red tape out, red carpet in. Right. You know that, Tracy, he has spoken about India's story, how India's story is connected to the world story, and how world story might face doom if corrective measures are not taken. So these are the 3 points Prime Minister touched from the high podium of World Economic Forum in Davos. And one of the major points that Prime Minister told, like a message from India, that come to India, Bharat mein aiye. If you want to live in peace with prosperity, come to India. So this was the key message he gave on the day when we are celebrating Subhash Chandra Bose's birthday on 23rd of January, when he had told Delhi chalo, Pradhan Mantri Narendra Modi told Bharat chalo. So this was the key message Prime Minister gave to the world community from World Economic Forum. And one of the major points he touched about the bad confrontation among the world powers. He told that world powers, world big powers, use the word specifically world big powers should speak in single voice for prosperity and peace. So this is also like talking like a statesman from the World Forum. And third thing, he means no words that world should follow the international law. And you can understand the hint was to one of the powers, one of the major powers, that is China, which is not following the international law in the South China Sea and around. So he told that world free of confrontation can only prosper, and if there is no such type of unison among the powers, he told that world whole globalization, sheen of globalization is dwindling and it may face further doom. So this is the way that Prime Minister told that this is how India can teach the world that we have contained climate in sustainable consumption way. He told that Indian traditions should be followed if you want to follow certain mitigation mechanism for climate change. And he told that if you have technology, give us technology, because we need to check carbon emission. Yes. But our requirements are there, we have to develop. But if you have technology, give us the technology. And he mentioned about International Solar Alliance that India had formed, taken initiative with France, and now it may become one of the major engines of world energy system. Tracy. Absolutely. We'll leave it there for the moment. Thank you so much, Akhilesh, for joining us with those details. Well, the Prime Minister has also had a brief meeting with Canadian Prime Minister Justin Trudeau, who will visit India from the 17th to the 23rd of February with an aim to further strengthen bilateral ties. Remember, both leaders had last met on the sidelines of the G20 in Germany in July 2017. We'll continue tracking all the developments coming in from Davos. At the moment, a quick break here. At the Davos summit, Prime Minister Modi makes a pitch, inviting investors to be part of the new India story. As the world takes note, what can India do to attain full potential? Watch the big picture as we break it down for you at 6:30 p.m. and 9:30 p.m.
only on Rajya Sabha TV. Welcome back. Switching focus to all the national stories, and Indian markets closed at fresh highs on Tuesday, with the Nifty ending at 11,083 and the Sensex at 6,139. Gains came after an International Monetary Fund or the IMF report showed that India was set to regain the title as the world's fastest growing major economy in 2018-19, beating China. Positive global cues also lifted the key indices to their new highs from early morning trade session itself. Here's a report. Riding on the bull run for the fifth straight day, the Sensex and Nifty scaled fresh all-time highs on Tuesday. The NSE Nifty closed up 117.50 points or 1.07% at a fresh life high of 11,083.70. The BSE Sensex also gained over 300 points or 0.96% to close at 36,139.98. The record rise in indices comes a day after the IMF said India is projecting to grow at 7.4% in 2018 as against China's 6.8%, making it the fastest growing country among emerging economies. Market on roll is basically Indian success story. As happened in the World Economic Forum, we can see how the Indian Prime Minister has been able to demonstrate India's success story. It's a country which is happening. It's a country with a destination. It's a country where people need to invest more and more. And as I see, India showcasing their success story and more on the economic growth. Trading sentiment remained bullish, backed by sustained capital inflows by foreign funds and widespread buying by retail investors, driven by strong earnings by companies. Among the top gainers were Axis Bank, whose stocks surged around 2%, and BHEL, Coal India, IOC and Yes Bank. The Indian rupee also jumped as much as 10 paisa at 63.77 for a US dollar at the interbank foreign exchange market. Because markets are always forward looking, so that's why Sensex and Nifty are showing the good results and good growth and good jump, making all-time highs again and again. So that is the reflection that coming time is good for us. Meanwhile, Asian stocks also advanced on Tuesday after US senators struck a deal to end a 3-day government shutdown. Globally, market participants await the outcome of the European Central Bank's meeting on Thursday for possible close to future shifts in the bank's monetary policy. The domestic markets are on a continuous rising spree since about last 13 months, with benchmark indices making and breaking new records every day. In addition to global cues, there's optimism after the government hinted at no populist measure in the forthcoming budget. The budget could aid in determining the future course of action for markets from here on. Reporting from Delhi with camera person Shamlal, I'm Kriti Mishra for Rajya Sabha Television. Election Commissioner Om Prakash Rawat took over as the 22nd Chief Election Commissioner of India on Tuesday. He succeeds Achal Kumar Jyoti, who remitted office on Monday. And exclusively speaking to Rajya Sabha TV, Rawat said that his main priority is to carry forward the legacy of free and fair elections. 2018 एक अहम साल है, कई राज्यों में चुनाव होने हैं, कई अहम राज्यों में चुनाव होने हैं और अगले साल लोकसभा के चुनाव। ऐसे में क्या प्राथमिकताएं होंगी? मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता यही है कि इलेक्शन कमीशन का जो रिच ट्रेडिशन रहा है फ्री, फेयर और क्रेडिबल इलेक्शन कराने का, उसको मैं आगे बढ़ाऊं कमीशन के सहयोग से, ताकि फ्री फेयर इलेक्शंस होते रहें। और दूसरे क्या है, 2019 में पार्लियामेंट के जनरल इलेक्शंस ड्यू हैं, तो उसके लिए भी तैयारी 1 साल पहले से शुरू होती है। तो उन तैयारियों को भी बड़े मजबूती से, एफिशिएंट तरीके से पूरा किया जाए। कुछ दलों ने ख़ास तौर पर जो चुनाव आयोग पर निशाना साधा है, ऐसे में क्या चुनाव आयोग उनके खिलाफ कोई सख्त रुख रखेगा या फिर किस तरीके से आप अगला कदम उठाएं? अगर ये छोटी छोटी बातें जो आती हैं, जब भी आप कोई भी इवन मैच अगर हो रहा होता है उसमें रेफरी अगर कोई भी निर्णय दे देता है तो उस पर भी आलोचना होने लगती है, तो ये तो स्वाभाविक है और ये हमेशा होता रहेगा। इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन कंडक्ट करना, उसमें लोगों का परसेप्शन उनके पास अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के आधार पर होता है और उन्हें अगर 360 डिग्री इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो वो कुछ भी उसको कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि पॉलिटिशियन कभी हार नहीं मानना चाहता, तो वो ये सोचता है कि पब्लिक के सामने हम कोई ना कोई जस्टिफिकेशन प्रोपेगेट कर दें कि जिससे ये ना लगे कि हमारे साथ ऐसा हुआ है।
विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ कराए जाने की बात हुई, पार्लियामेंट में भी ये बात चली, तो इस पर चुनाव आयोग का क्या रुख है? नहीं, चुनाव आयोग का तो स्थापना ही इसलिए हुई है कि आपको इलेक्शन कंडक्ट कराना है. दैट्स द ओनली लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी. किस तरह कराना, क्या कराना, ये संविधान और कानून में होता है जो हमारी पार्लियामेंट बनाती है. तो जब संविधान और कानून उस तरह का होगा तब चुनाव आयोग अपना रोल पूरा करेगा. जी, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए. तो आप देख सकते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त का साफ तौर पर कहना है कि फ्री और फेयर इलेक्शन चुनाव आयोग की प्राथमिकता होगी. कैमरामैन शिव के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली. The Silver Jubilee of India-ASEAN partnership is being celebrated in New Delhi on the 25th of January with an unprecedented summit meet. But even before the main event, several other programs have been organized. Held on the sidelines of the ASEAN-India Business Council Forum, a small but impressive exhibition of textile fabrics was held on Tuesday. Here's a special report. Bright Indian textiles showcase for top diplomats of ASEAN nations who got an insight into what India is producing to attract business in Southeast Asia on Tuesday. The policy of Act East policy of government Indian is the good one. It's very important, and the ASEAN is support for this policy. Act East policy does mean the bridge between Indian and ASEAN through Northeast, you see, Northeast. This is the issue of the connectivity, the air connectivity, the road connectivity, and the maritime connectivity. The Laotian ambassador said the upcoming trilateral India-Myanmar-Thailand highway will boost the trade between ASEAN countries and India. ये इसके वजह से हम लोग का बहुत सुविधा मिलेगा. मतलब ये हमारा मणिपुर का जो बना हुआ हैंडलूम का प्रोडक्ट है, ये तो सिर्फ इंडिया के अंदर से बेचने से वजह से आउटसाइड कंट्री में भी, एशियन कंट्री में भी सेल कर सकेगा. I think the roadways, it's making us like connect more easily to the other countries and show our products and many other things, like to learn from them also and to show our things. Like small entrepreneurs and producers of silk textiles attracted a lot of attention from the ASEAN visitors. ट्रेडिशनल प्रोडक्ट को यदि हम एशियन के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं और हमारी ट्रेडिशन क्या रही है टेक्सटाइल्स में, सिल्क टेक्सटाइल्स में, हैंडलूम टेक्सटाइल्स में, और कितने सालों पुरानी रही है, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. The enthusiasm and keen interest shown by visitors at the textile exhibition is a reflection of recent upgrade of India's relation with ASEAN nations that has gone up beyond just looking east to acting east in the recent years. Bureau Report, Rajya Sabha TV. Vice President M. Venkaiah Naidu has said that it is the responsibility of every Indian to pay taxes because the lack of revenue will impact development and welfare works of the government. The Vice President said this while addressing a seminar at a college in Hyderabad. He also said that the middle class and youth have a big role in the development of the country. Vice President M. Venkaiah Naidu on Tuesday addressed a national seminar at Keshav Memorial College in Hyderabad. The Vice President spoke about the challenges in finance and marketing areas, emphasizing that the middle class and youth can play an important role in the economic development of the country. Expanding middle class will be the key driver of India's economic growth in the coming years. The large population of India, about 65% remaining under 35 years. The need of our is to take full advantage of these demographic numbers by creating adequate job opportunities for a young population. The Vice President also talked about the government's economic reforms like note ban and GST. He said these reforms are an important step towards prevention of tax evasion. He also said that transparency in governance will ensure accountability and will also improve remittances to the government. Expansion of formal economy will naturally lead to increased tax collections, higher revenues to the government, which in turn will be used to accelerate development, building roads, schools, hospitals, other essential infrastructure. While tax evasion has to be dealt with sternly, it should be ensured that there is no unnecessary harassment of the taxpayer
by overzealous officials. The Vice President also said that skill development along with value-based education is vital for students, as it will help them stay connected with the Indian culture and tradition. Rajkamal Rao's report for Rajya Sabha TV. The Supreme Court on Tuesday pulled up both Rajasthan and Madhya Pradesh governments while dismissing their plea to reconsider lifting the ban on Padmavat in their states. The SC then directed the two states to implement its order from the 18th of January, allowing the screening of the film. It also ordered both the state governments to take necessary steps to maintain law and order. Both states had cited potential law and order issues during the screening of the controversial film. The apex court, however, asked the states to follow its order and gave them the liberty to approach it again if the situation arises. The movie releases on 25th of January. And the top international story, ending the three-day shutdown in the US, President Donald Trump signed a short-term government funding bill that will keep the government funded till the 8th of February. The Democratic leadership agreed to back the bill after accepting promises from Republicans for a debate later on the future of young illegal immigrants. It is the fourth temporary measure since October because Capitol Hill cannot agree on a longer-term budget. Earlier on Monday, the House passed the continuing resolution 266 to 150, while the Senate passed the measure 81 to 18. The measure funds the governments till the 8th of February, before which Democrats and Republicans need to agree to a long-term solution to the government funding and on issues related to illegal immigration. The bill includes a 6-year extension of the Children's Health Insurance Program. The vote comes 3 days after the government officially shut down on Friday after an impasse between the Democrats and Republicans. Claiming victory in his standoff with the Democrats, Trump signed the measure into law, ensuring that government operations would return to normal on Tuesday. And that's it on the news at 6. Thanks for joining us.